A continuation of yesterday's class in which we were doing past papers. आज भी हमसे past papers करेंगे and we'll see the possible type of questions that can come in your exam. So I'm going to continue with this booklet. Let's see शुरू से करते हैं. Question number 1. Figure 4.1 is an electron micrograph of a mesophyll cell from a leaf. Mesophyll cell present होता है आपके plant cell में. And they have told you guys that it is from a leaf. So let's see. Calculate the magnification. We cannot do this right now due to the difference in measurement वगैरह. Identify by using letter A to F a part of the cell shown in figure 4.1 where the following substances are located. So we need to identify from A to F chlorophyll आपको कहाँ पे नजर आएगा. Let's see. A to F. So chlorophyll is obviously your C. ये रहा आपका chlorophyll. ये दूसरा, तीसरा, चौथा. This is fifth, sixth, seventh, and eighth. Total 8 chlorophyll in this plant cell. Just misses labeling. The correct labeling is C. And if you observe, सारे chlorophyll are on the edge of the plant cell. बिल्कुल they're sticking to the edge of the plant cell. This is due to the presence of your vacuole. ये रही आपकी central vacuole. The vacuole, it is so large, it is so centralized कि it starts to push the chloroplast towards the edge of the plant cell. And ये क्यों करती है इस तरह? To basically absorb maximum sunlight for the process of photosynthesis. So let's see. Chlorophyll is C. Let's write it down. So we need to find cellulose. Cellulose कहाँ present होता है? Cellulose is present in your plant cell wall. या फिर we can say your plant cell wall is made up of cellulose fibers. हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी. They're arranged in a crisscross manner जिसकी वजह से you have pores in your cell wall and which is why your cell wall is permeable in nature. So cellulose जहाँ पे आपको cell wall की labeling नजर आएगी, that will be your cellulose. And you can see it is in B. This one. It is pointing towards your cellulose. So B is the correct answer. DNA. DNA is present in your it is present in your nucleus. So we are going to look for the structure which is pointing towards the nucleus, labeling which is pointing towards the nucleus. If you look at this diagram, ये रहा आपका nucleolus, and obviously this whole structure is your nucleus. This whole structure is your nucleus. ये आपका nucleolus in the middle. So D will contain DNA. Here we have phospholipids. Phospholipids are also present in your, we can say to an extent, it is present in your chlorophyll. ये आपके chlorophyll में आपको नजर आएंगे in the like cell wall of your chlorophyll या फिर cell membrane of your chlorophyll. So उसके अंदर you can find phospholipids. But we're going to ignore this for now since we haven't studied this topic yet. But I'm writing down the answer for now. It can either be C or it can either be F. So both of them is pointing towards your chlorophyll. So let's see. Question number 2 says figure 4.1 is an electron micrograph of a chloroplast from a mesophyll cell in a leaf. Calculate the magnification we cannot do, but let's see किस तरह होगी. ये रही आपकी actual. इसको आप measure करोगे, this will give you your image size. तो आपको एक quantity पता चल जाएगी. Let's say this is 1.5 centimeter. 1.5 centimeter is equal to 0.5 micrometer. तो इस तरह करके you're going to cross multiply and then you're going to find out the magnification. Say two features visible in figure 4.1 that identify the organelle shown as a chloroplast. तो आपको कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? Forget the diagram. Diagram को ignore करो. What do you know about your chloroplast? इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? Try to remember that. You have starch grain, you have grana, you have thylakoid, you have um, internal membranes होती हैं आपके पास. फिर you can even discuss the shape of your um, chloroplast. किस तरह का shape होता है? Typical सा यूं करके ovoid shape होता है. You can discuss that as well. Then you can also discuss the length. Length मैंने आपको range दी थी 5 to 10 micrometer. You can even write that as well. So you can ignore the diagram and try to revise the concepts that you already know from your notes. वो भी आप लिख सकते हो. So say two features visible in figure 4.1. You can say सबसे पहले तो आपको obviously इसके अंदर starch grain नजर आ रहे हैं बड़े बड़े से starch grain. These are your
starch, grain. So you can also see the most safest option is your thylakoid. ये रहा आपका thylakoid and grana, इनके stack आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर. So this is also one of the very safest option. फिर आप discuss करते हो इसका size and as well as the shape. इन दोनों चीज़ों को भी आप mention कर सकते हो. There's no restriction. So we can say starch grain and we can also say grana या फिर thylakoid जो भी आपको याद आ रहा है. Do not leave the lines empty. As in do not leave the question empty. Skip नहीं करना. जो भी आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो लिख देना. Most of the time it does match with your keyword. तो इस तरह भी बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं. Chloroplast absorbs phosphate ions from the surrounding cytoplasm. Suggest one way in which chloroplast use phosphate ion. So phosphate ion किस में बना सकते हैं? They can use it to make ATP. ATP के synthesis में, if you remember, ATP का molecule किस तरह होता है? It has three phosphate groups attached. So it can use ATP, use this phosphate group to make ATP. Basically, I haven't studied the structure of ATP अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. But I'm telling you guys कि phosphate ions are most probably used to synthesize ATP, make ATP. जब ये हम स्टडी करेंगे आपका सेल स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन एंड और चैप्टर स्टडी करेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा. Figure 2.1 is an electron micrograph of part of an animal cell. A centriole is labeled. And remember, centriole सिर्फ आपके animal cell में आपको नजर आता है. So a centriole is labeled ये रहा. See how they are arranged. आपको पेयर में नजर आएंगे, दो पीसेस नजर आएंगे at right angle to each other. इसमें इतना ज़्यादा right angle नहीं है, but let's say सेल आपका मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है आपके सेल के अंदर, which is why अभी ये थोड़े से राइट एंगल पे नजर नहीं आ रहे. But to make it easier for you, they have even labeled this as well. इनको पता है बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा सेंट्रियोल. सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इसी में आती है. Whereas it is very easy to identify क्योंकि हमेशा दो पेयर में आपको नजर आएंगे. एंड एक ही पेयर होगा. दो नजर आएंगे एंड सिर्फ एक ही पेयर होगा पूरे सेल में. ऐसा नहीं होगा कि एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल वहाँ पर है, तीसरा सेंट्रियोल का पेयर यहाँ पर है. इस तरह नहीं होगा. एक ही पेयर होगा एंड उसमें दो पीसेस होंगे सेंट्रियोल के एट राइट एंगल टू ईच अदर. Name the structures label A to C. Very easy question. Free के आपको 3 marks मिल रहे हैं for each structure that you identify. So let's see A to C क्या क्या आपके structures हैं. A is your nuclear membrane. Nuclear membrane लग रही है because it is surrounding. ये रहा. अगर ये बीच में होता, labeling आपकी बीच में जा रही होती तो फिर आप बोलते this is your nucleus. But since it is labeling at the edge of your nucleus, तो आप बोलोगे ये आपकी nuclear membrane है. Nuclear membrane is also known as nuclear envelope. So either you can say this is your nuclear envelope या फिर nuclear membrane. B is your mitochondria. B is your mitochondria. And ये आपको अपने आप को खुद teach कराना पड़ेगा how to identify the structures. C is your starch grains. या फिर C is your Golgi vesicles. आपको यहाँ पे गोल्गी बॉडी भी नजर आ रही होगी हल्की सी. ये रही आपकी गोल्गी बॉडी बिल्कुल हल्की सी नजर आ रही है एंड इसके करीब ही है आपका वेसिकल्स. So you can either write this as your lysosomes या फिर Golgi vesicles, दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं. So A is your nuclear membrane, nuclear membrane. B was your mitochondria, and C is your Golgi vesicle. Here we need to identify, describe the role of centrioles in animal cell. So जब आपका cell mitosis undergo कर रहा होता है, इसमें help करता है. It basically replicates during each cell division के process, each cell division का cycle. And what it will do, it will move to the opposite pole. And वहाँ जाके it will start to assemble and organize your microtubules. फिर it will grow spindle fiber attach होंगे आपके chromosome के centromere पे जाके and through those spindle fiber it will pull the centromere to the opposite poles of your cell. So again we are going to skip this question. ये आगे जाके आप पढ़ोगे पूरा concept properly. We're not going to write the answer here. Explain why it is possible to see the internal membrane of a cell in an electron microscope such as figure 2.1 but it is not possible to see them when using light microscope. So आपको याद होगा last topic that we did was pros and cons of electron microscope. So pros में हमने क्या लिखा था?
Rosemary wrote कि it has a high magnification and it has a high resolution. कुछ इस तरह के pointers हमने mention किए थे ये रहे. High magnification and high resolution in your electron microscope. तो same बिल्कुल यही आंसर आपने यहाँ पे भी लिखना है कि your electron microscope, it has a high magnification. So you can write it has a high resolution, and you can even describe the definition of resolution, which is ability to distinguish between two points as distant. ये भी लिख सकते हो. फिर you can even give comparative figures. हमने एक activity की थी in which मैंने आपको diameters दिए हुए थे and you had to identify कि हम इसे scale लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या नहीं. तो वो एक्टिविटी कहाँ गई? ये रही, ये एक्टिविटी हमने करी थी. So basically you can give comparative figure as well कि आपकी width of membrane is 7 nanometer whereas the resolution of your light microscope is 200 nanometer. An electron microscope की होती है 0.5 nanometer. So we cannot see cell membrane and assay structure using the help of your light microscope. जितने भी आपको pointers याद आ रहे हो पेपर में, do write those pointers. Do not shy away from writing any point. हो सकता है वो आपको particular point की वजह से mark मिल जाए. So इसमें इस question में you can mention that your electron microscope, EM is a short form from electron microscope. It has high resolution, high magnification, and high resolution. So you can even give the definition of resolution. Resolution is the ability. Resolution. To save our time, I'm going to write the definition. Please just heading. So point number 2, definition of resolution. आपने ये दे दी. It is the ability to distinguish two points as distant. ये वाली आपने डेफिनेशन दे दी. फिर यू कैन गिव अ कंपैरेटिव फिगर एज वेल. आपको किसी भी सेल का वो याद हो, विथ याद हो, किसी भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सिंस दे हैव मेंशन इंटरनल मेम्ब्रेन, तो आप सेल मेम्ब्रेन की वैल्यू दे दो. सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ विड्थ ऑफ 7 नैनोमीटर. ये आपको आगे जाके याद होगी when we'll be studying transport in mammals. So cell membrane has a width of 7 nanometer, whereas light microscope has a resolution of कितनी होती है 200 nanometer, and electron microscope has a resolution of 0.5 nanometer, which is why we need to use electron microscope to view the internal membrane. कम आपने लास्ट में कंक्लूडिंग एक पॉइंट आपने दे दिया अपना. अच्छा, I'm looking at the marking scheme right now and they're even accepting थोड़े से ऐसे pointers such as resolution is equal to the half of wavelength. तो कोई सा भी आपको pointer याद आ रहा हो, either it matches your question or not, आप लिख सकते हो, as long as it's closer to the concept asked. सही है. So do not shy away from writing wrong answers. कभी कभी वो wrong answer आपके बिल्कुल correct हो जाते हैं. ये तभी आपने करना है जब आपको question कोई particular आ ना रहा हो. पता चला पूरे पेपर में आप यही चीज़ कर रहे हो, ये तो काफ़ी unsafe बात हो जाएगी. Okay, so let's see this question. Figure 1.1 shows the outline of a ciliated cell from the human gas exchange system. Inside the ciliated cell, in figure 1.1, draw the nuclear envelope and the mitochondria as they would be seen with an electron micrograph. या microscope. मैंने आपको पहले भी बताया था, you should know how to draw the structure, you should know the function of the structure, and you should be able to identify the particular structure from an electron micrograph. ये तीनों चीज़ें आपको करना आनी चाहिए. And this is the second time we are seeing a question in which they have asked you to draw a particular cell organelle. So mitochondria का तो बहुत easy सा concept है. You need to draw an outer membrane and an inner folded membrane. ये आपको folds दिखाना ज़रूरी है. फिर फॉर द न्यूक्लियस, सिंस दे आर पर्टिकुलरली आस्किंग फॉर द न्यूक्लियर एनवेलप, तो आपको न्यूक्लियर पोल्स भी दिखाने होंगे. कुछ इस तरह हमने बनाई थी, इफ यू रिमेंबर. बीच में आपका न्यूक्लियर था एंड द आउटर मेम्ब्रेन वाज आल्सो कंटिन्यूस विद योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आपने वो भी थोड़ा सा दिखा दिया. इस तरह लेबल दी स्ट्रक्चर, लेबल भी कर देते हैं हम इसे, ऐसा कोई इशू ही नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज योर न्यूक्लियर
कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ciliated cells. तो किस तरह करेंगे? इन्होंने आपको एक्चुअल साइज दिया हुआ है. यू नीड टू मेजर दिस लाइन. सही लाइन आप मेजर करोगे, you'll get the image size. Then you're going to put the formula of magnification, that is image size divided by actual size, and then you're going to use your calculators to calculate the magnification. Magnification किस तरह लिखोगे? क्रॉस लगा के फिर वैल्यू लिखना है. Make sure to put this cross. Question number 5 we had already done. ये हमने कर लिया है. Let's do this question. Figure 2.1 shows a diagram made from an electron micrograph of two adjacent cells in a leaf. सही है. Structure A and B are both visible using the light microscope, but the internal details of these organelles shown in figure 2.1 is only visible using the electron microscope. ये हमें पता है. Internal detail आप सिर्फ electron microscope के through देख सकते हो. Because your electron microscope, it has a high magnification and a high resolution. Explain why the internal details of structure A and B are only visible when using the electron microscope and not when using the light microscope. तो अभी जो मैंने pointer बोला कि your electron microscope, it has a high resolution, it has a high um, magnification, and again you can give the definition of resolution. पहला pointer आप ये लिखोगे कि आपके electron microscope में you have high resolution and high magnification. Next pointer you can give the definition of resolution. Here you can give the example. कि एक let's say um, a cell membrane has a width of 7 nanometers जो हमने पहले किया था, exactly same pointer. And then you can give the resolution of light microscope and the resolution of electron microscope. Compare करोगे आप दोनों के, and then you'll tell them कि 7 nanometer is too small to be seen with the help of a light microscope, which is why we need to use an electron microscope to properly view the internal membranes. So exactly same pointers है. जब भी आपको इस तरह um, पूछें कि why the internal details cannot be seen with the help of a light microscope, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको अपना आंसर देना है. नेम द फुल स्ट्रक्चर्स लेबल सी डी एंड ई. सी क्या है? सी इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमें काफी रफ एंड ग्रीनी नजर आ रहा है. एंड इसके सरफेस पे यू हैव योर क्या होते हैं आपके राइबोसोम्स होते हैं. सो सी इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डी इज ऑब्वियसली योर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स. सी डी एंड ई. ई काफी स्मूथ सा नजर आ रहा है. सेम स्ट्रक्चर है ये दोनों, बट एक स्मूथ है एक रफ है. So obviously the second one is going to be your smooth endoplasmic reticulum. So C is your rough. Full form लिखना please. अभी to save our time and to do maximum question in the class, which is why I'm writing short form. E is your smooth. अच्छा, state one role of vacuoles in plant cell. Plant cell में role of vacuole क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं. It stores cell sap. It stores ions, minerals, अमाइनो एसिड, शुगर, काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करता है. फिर ये भी लिख सकते हो मोस्ट कॉमन वन कि इट पुशेस द क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द एज ऑफ द सेल टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फिर क्या हो सकता है? इट गिव्स स्टोर्स योर प्रेशर टू योर सेल, इट गिव्स सपोर्ट टू योर सेल, इट होल्ड्स या स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट. बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं एंड आई हैव रिटन दोस इन द नोट्स एज वेल. So the my favorite one is it pushes the chloroplast towards the edge of the cell. अगर मैं होती तो I would have written it pushes the chloroplast towards the edge of the cell. कोई सा भी लिख सकते हो आप pointer. Edge of the cell. Let's say you are unsure कि आपकी marking scheme ये accept करेगी या नहीं करेगी. So to make sure कि आपने आंसर बिल्कुल confirmed सही लिखा है, आप ये वाला pointer लिख सकते हो. It stores cell sap. This pointer will always be marked correct. There's no error in this line. Structure F and G have very different permeability properties. Describe how the composition of structure F and G determines the permeability property of these structures. Structure F and G पहले हम देखने की कोशिश करते हैं. What are they? So this is referring to your cell membrane and cell wall. And क्योंकि हमने अभी topic नहीं पढ़ा है, we're going to skip this question. Describe the role of plasma desmata in transport in plant. So plasma desmata का सबसे common role is it allows transport of ions, hormones, amino acids, sugar, बहुत सारी चीज़ें between the adjacent cells and क्या लिख सकते हैं और it allows rapid communication between the two cells. It allows symplastic pathway. It allows um,
movement of material through the symplast between companion cell to the sieve tube. ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे in your transport and plant. But the ones that you already know from this chapter is it allows transport of sugar, amino acid, sugars, amino acids, etc. It allows rapid communication between adjacent cells. ये दो pointer अभी आपको पता है for the process, for the role of your plasmatasmata. Third pointer that you'll learn in transport and plants. तो जब हम वो करेंगे, we'll see this question. It allows rapid communication between adjacent cells. Third pointer वो हम बाद में करेंगे. That you do not know as of now according to your course. फिर question we did this yesterday. ये हो गया हमारा this as well. Let's see this question. Figure 1.1 is a label diagram of a leaf palisade mesophyll cell as seen with a high quality light microscope. Light microscope तो यूज किया है but they have used a high quality which is why आपको इसके अंदर क्लोरोफिल नजर आ रहे हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस नजर आ रही है गोल्गी बॉडी काफी सारे सेल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इवन द टोनोप्लास्ट एज वेल ये काफी अच्छी रेजोल्यूशन वाला यूज किया होगा उन्होंने. An electron micrograph of the same mesophyll cell at the same magnification would show more detail than is shown in figure 1.1. This is true. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की तो अलग ही बात होती है काफ़ी अच्छे डिटेल्स नज़र आती हैं इसके अंदर. Excellent. Why the same magnification an electron micrograph is able to provide more detail than a light microscope. सेम मैग्निफिकेशन है दोनों में. अगर मैग्निफिकेशन सेम है तो फिर पॉइंटर आ जाता है आपकी रेजोल्यूशन का रेजोल्यूशन वाला पॉइंटर बचता है. तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ हायर रेजोल्यूशन. सिंपली आपने ये बात अपने आंसर में लिख दी इनको बता दी कि अगर मैग्निफिकेशन सेम है एक और चीज़ डिटरमिन करती है द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप दैट इज रेजोल्यूशन. तो अगर मैग्निफिकेशन सेम है तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन एक ही बेटर होगी. फिर आपने रेजोल्यूशन की रेजोल्यूशन से लिंक करते हुए एक पॉइंट लिख दिया कि ड्यू टू दिस electron microscope is more easily able to distinguish between two separate points. ये बेसिकली आपके रेजोल्यूशन की डेफिनेशन से आया है. more easily able to distinguish between two points. ये आपने लिख दिया. फिर यू कैन गिव द कंपैरेटिव फिगर एज वेल कि आपकी लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 200 होती है whereas इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it has a resolution of 0.5 nanometer. Describe three additional features that could be seen on an electron micrograph of the leaf mesophyll that are not seen in figure 1.1. और क्या चीज़ें आपको दिख सकती हैं? You can pick up a particular cell organelle and उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. Let's say I pick up this mitochondria. So I will say अगर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यूज किया होता you would have been able to see the inner membrane नज़र आती हैं आपको क्रिस्टे नज़र आते, the foldings of the inner membrane, आपको राइबोसोम्स नज़र आता इन द माइटोकॉन्ड्रिया, आपका सर्कुलर डीएनए इनफैक्ट वो भी नज़र आता. काफ़ी सारी चीज़ें जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल सेल स्ट्रक्चर याद हो माइटोकॉन्ड्रिया के आप वो लिख सकते हो. You can even focus on the chloroplast as well. Chloroplast में you can see the grana, thylakoid, फिर वही again the double membrane of your chloroplast, circular DNA of your chloroplast. अच्छा make sure different चीज़ें mention करो. So as to gain more marks. फिर एक और चीज़ that is missing from the overall cell structure is the presence of the ribosomes. Ribosomes आपको नजर नहीं आ रहे. You can mention there as well. और क्या नहीं नजर आ रहा? You cannot see Golgi vesicles. Golgi vesicles यहाँ पे कहीं भी mention नहीं. Golgi body है रहा, but the vesicles surrounding your Golgi body those are missing. तो इससे related आप लिख दोगे Golgi vesicles. साइटोप्लाज्म से रिलेटेड आप लिख दोगे राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस नजर आ रही है? हाँ न्यूक्लियस ये रहा.
तो न्यूक्लियस से रिलेटेड आप लिख दोगे न्यूक्लियर एनवेलप, फिर न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोलस हमें फिर भी नज़र आ रही है डार्क डार्क, वो हम मेंशन नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पोर। और क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ सकती थी। सेल वॉल इन्होंने मेंशन किया है, तो दे हैव लेवल सेल मेम्ब्रेन। हम्म लेट्स skip that for now. प्लाज्माडेस्माटा है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल। या your rough endoplasmic reticulum and your smooth endoplasmic reticulum ये भी मिसिंग है फ्रॉम योर साइटोप्लाज्म, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो काफ़ी सारे पॉसिबल आंसर हैं। द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, यू आर गोइंग टू गिव 3 एनी 3 ऑफ दी। लेट्स अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को पिक कर रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक ही पॉइंट है दोगे। दिस इनर मेम्ब्रेन विल क्लासिफाइड एज 1 पॉइंट। सर्कुलर डीएनए फिर आप दोबारा लिखोगे इन द नेक्स्ट पॉइंट के माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डीएनए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यू नीड टू यूज अनदर सेलुलर ऑर्गेनल। फिर look at this question. Figure 1.1 shows electron micrograph of some eukaryotic cell organelle. Eukaryotic हमारे animal cells होते हैं, animals and plant cells. For each of the organelle A, B, C and D shown in figure 1.1, state the name and function of each. तो A क्या है? A आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं पे हम कर लेते हैं एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइजेस ATP वाया एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा इन योर A2, बट फॉर नाउ रट्टा लगा लो कि ATP is produced via aerobic respiration, which means कि it is produced in the presence of oxygen. फिर B क्या है? B में it is very hard to identify, but आपके sacs नज़र आ रहे होंगे flattened and they are on top of each other, flattened sacs. तो ये है basically आपका Golgi body. B is your Golgi body and Golgi body का function बहुत सारे होते हैं, processing, packaging, modification, कुछ भी लिख दो। My favorite one is the modification of lipids या फिर modification of proteins, कुछ भी लिख दो। फिर डी में रफ अपीयरेंस नजर आ रही है and you can see visible ribosome. Obviously this is your rough endoplasmic reticulum and इसका function क्या होता है? It is needed for synthesis of proteins. Synthesis of proteins. Then you have C. C is obviously your chloroplast. इस तरह आपको अपने आप को ट्रेन करना है to quickly identify कौन सा सेल ऑर्गेनल क्या है। And chloroplast का function again synthesis of ATP हो सकता है, but you're going to write something different. You can write in the process of photosynthesis, the most common one. Photo यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, photosynthesis वाला पॉइंटर आप मेंशन कर सकते हो। Yes, Sana, you're going to solve this question. And 8 marks मिल रहे हैं, 1 mark to identify, second mark for the function. So this is a very mark getting question. आराम से आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, this question is very difficult to identify. We're going to skip this for now. इतनी horrible images नहीं आएंगी आपके पेपर में, no need to worry. काफ़ी proper images देते हैं। तो स्कैन हुआ हुआ पेपर विच इज वाई कुछ इस तरह नजर आ रहा है। Figure 1.1 is an electron micrograph of a mitochondria. State the function of mitochondria. तो बहुत common. It synthesizes ATP. Synthesis of ATP via aerobic respiration. Name the structure A. ये आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं ऑफ योर इनर मेम्ब्रेन एंड इसको आप बोलते हो क्रिस्टल। अच्छा, स्केल बार दिया हुआ है, आई कैन प्रिडिक्ट कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्निफिकेशन पे होगा एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्किप दैट फॉर नाउ। Explain why the light microscope could not be used to produce the image in figure 1.1. वही, it has a low resolution, it has a low magnification. Resolution की आप वैल्यू भी बता सकते हो कि कितनी रेजोल्यूशन है। It has a resolution of 200 nanometer which is very low. फिर आप मैग्निफिकेशन के बारे में बता सकते हो, it has a very low magnification which is why we cannot see the internal structure this well. Scientists think that the mitochondria were once prokaryote. This is true. ये कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन? आपके endosymbiotic theory से। The evidence for this is that mitochondria have features in common with prokaryote. Prokaryote are your bacterial cell. And ये मैंने आपको पढ़ाया भी था।
I thought you this as well. हमने कुछ similar features भी इसके list down किए थे. There are two features that mitochondria have in common with the prokaryote. So let's go back here up kind of symbiotic theory, and these four features were common among them. 70S ribosome, circular DNA, comparable sizes, and division by binary fission. So exactly same ये answer in your marking scheme as well. And I told you, I think in the beginning of the course, okay, my answers and my notes are based on your marking scheme. So try to learn directly from here. कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है, but you can for your own research. लेकिन all the pointers that I write in my notes, all the question and answers, all the essay questions, सब come from your marking scheme, ताकि आप बच्चे को कहीं और से याद करने की ज़रूरत ना पड़े. So you can write circular DNA, the most common one, and you can write 70 as ribosomes, this as well. Next question. A student compared an image of a plant cell with an image of an animal cell. Both images were of the same magnification. Part A to C are four comparative statements about these images. Both cells contain large number of an organelle bound by a double membrane. The inner membrane of these organelles is folded. These organelles all have a similar structure but do not always appear to have the same shape. अच्छा, डबल मेम्ब्रेन है एंड द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड. तो ये एक ही स्ट्रक्चर में होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. द इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है एंड इट इज फॉर्मिंग क्रिस्टल. So the organelle is obviously your mitochondria. Suggest one reason why the organelle described do not always seem to have the same shape. ये क्यों हो सकता है? लेट्स से जब आपका साइंटिस्ट है या जो भी स्टूडेंट है वो पिक्चर ले रहा है, आपकी इमेज ले रहा है आपके प्लांट सेल की, हो सकता है द माइटोकॉन्ड्रिया वाज इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, या फिर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया अभी फ्रेशली डिवाइड हुआ था बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल फिजन. तो लेट्स से फ्रेशली डिवाइड हुआ था विच इज वाई आपके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज थोड़ा सा छोटा था कंपेयर टू एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया. या फिर यू कैन से देयर वाज डिफरेंट ओरिएंटेशन व्हेन द सेक्शन वाज टेकन, व्हेन द सेक्शन ऑफ द स्लाइस या फिर सेल वाज टेकन. So I would write, I think the safest option, your safest suggestion देना है. You're free to give any type of suggestion. सही है, इसमें usually free hand होता है and marks कटने के chances काफ़ी कम होते हैं. So you can say some mitochondria may be dividing, हो सकता है, which is why इनका shape different है. Mitochondria may be, and आपने बता भी दिया किस तरह divide करते हैं, by binary fission, may be dividing. In the case of mitochondria, it is known as mitochondrial fission. Mitochondrial fission. But make sure to take an educated guess. ऐसे अजीब सा अपने पास से थोड़ा सा मत लिखना. Try to make an educated guess. Both cells contain cell structure that are approximately 25 nanometer in diameter and are not bound by a membrane. State the name of the cell structure present. एक ही आपके सारे ऑर्गेनल्स में एक ही ऐसा सेल स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन एंड दैट इज राइबोसोम. लाइसोसोम जो होते हैं, जो आपकी गोल्गी बॉडीज आते हैं, उनके पास फिर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बट राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. Draw a circle around the measurement that has to be the same value as 25 nanometer. 25 nanometer, centimeter, millimeter, micrometer एंड नैनोमीटर. याद है आपको, मैंने ये एक्टिविटी कराई थी. मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3. क्वेश्चन देखने से पहले आपने जल्दी से ये टेबल बना दिया. नैनोमीटर में दिया हुआ है, वी नीड टू गो टू माइक्रोमीटर, तो हम डिवीजन करेंगे, छोटे से बड़ा यूनिट जा रहा है. तो 25 विल बी डिवाइडेड बाय 1000. 1 2 एंड देन वन मोर, यहाँ पे जीरो आ जाएगा. 0.025 माइक्रोमीटर. अपने कैलकुलेटर से कर लेना है ये. आई कैन डू दिस डायरेक्टली एज वेल. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.025 micrometer. There are strands of cytoplasm passing through the channels in the cell wall of the plant cell. Strands of cytoplasm. They are not visible. कौन से होते हैं? Strands of cytoplasm.
They are your plasmodesmata. Plasmodesmata के जब हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे थे तो हमने मेंशन किया था द स्ट्रेंथ ऑफ साइटोप्लाज्म. Extend one advantage to the plant cell of having these structure. इसका advantage क्या होता है? Rapid communication between the adjacent plant cell, most common. या फिर transfer of substances from one um, cell to another. So my favorite one is the rapid communication between the adjacent plant cell. वही लिख दो. Rapid एक ही पूछा है. Communication between the adjacent plant cell. Properly लिखना sentence, it allows rapid communication between the adjacent plant cell. Figure 1.1 is a transmission electron micrograph of a part of an epithelial cell from the small intestine of a mammal. So आपको ये पता होगा from your O level. In your digestive system, in your small intestine, you have microvilli. इनका function क्या होता है? They increase the surface area for the process of digestion. या फिर जो भी absorption हो रही होती है, secretion हो रही होती है, उन सब के लिए increase कर देता है the surface area. So X is your microvilli. थोड़ा सा ये O level से question आया हुआ है, I think. Name the cell structure label X in figure 1.1 and say their function. So X is microvilli, which increases the surface area available for digestion. With this, I'm going to end the class. I think we have done ample practice. कहीं भी आपको किसी भी question में problem आ रही हो and you're finding difficulty, you can send it to me on WhatsApp. I'll try to explain it with a short video. See you tomorrow, inshallah.